Question hour. Please sit down. Question hour. Question hour. Please sit down. Question hour. बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए. Please sit down. Please sit down. Please sit down. This is question. बैठ जाइए. Question. बैठ जाइए. राम गोपाल जी, this is question. इम्तिहान नहीं दे पा रहे हैं, आधे से ज्यादा लड़के इम्तिहान नहीं दे पा रहे हैं ग्रामीण बैकग्राउंड के, तो उसमें अगर लड़कों के हितों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्यों हैं? ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, उनका जवाब सुन लिया. अब बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए. क्वेश्चन 181. क्वेश्चन नंबर 181 जी. अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभापति पर रखा है. अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है. 20 साल से एमसीडी को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को अफसर लोग चला रहे हैं. ये ठीक है जो उत्तर दिया है मंत्री जी ने कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली या सिविक बॉडीज में जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोकने के लिए नक्शे ऑनलाइन हो रहे हैं, ई टेंडरिंग हो रही है, प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन हो रहा है, बायोमेट्रिक सिस्टम हो रहा है, कंप्लेंट सेंटर खोले जा रहे हैं. पर फिर भी आप देखिए कि ये जो सुपरिटेंडेंट कंट्रोल और डायरेक्शन ऑफ एमसीडी की जिम्मेदारी दिल्ली गवर्नमेंट की है, पर उसको ठीक तरह से मॉनिटर नहीं किया जा रहा. ये जो आंकड़े दिए गए हैं इसमें नॉर्थ कॉरपोरेशन के अंदर 364 केस थे और सिर्फ केस जो फाइनलाइज किए हैं वो 13. साउथ एमसीडी में सिर्फ साउथ कॉरपोरेशन में 256 करप्शन के केस थे, फाइनलाइज किए 8. ईस्ट दिल्ली कॉरपोरेशन में 712 थे, फाइनलाइज किए सिर्फ 8. 1300 सवाल कर रहा हूं मैं. 1332 केस में से सिर्फ 29 केस जो अफसरों के खिलाफ हुए, उसमें उनको पकड़ा या छोड़ा ये भी नहीं मालूम. मेरा सवाल ये है कि अफसर लोग चला रहे हैं और मेयर्स के पास कोई पावर नहीं है. अगर हमें ध्यान हो तो 1915 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले मेयर थे, मेयर इन काउंसिल के. मेरा सवाल क्वेश्चन सर ये है कि जब चुने हुए प्रतिनिधि और मेयर और दूसरे प्रतिनिधियों के पास पावर ही नहीं है तो इसके ऊपर चेक कैसे रखा जाएगा? तो क्या मंत्री जी मेयर इन काउंसिल बनाएंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे ताकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास पावर हाथ के अंदर आए और भ्रष्टाचार को लगाम लग सके? जी अध्यक्ष महोदय, एमसीडी दिल्ली सरकार के अधीन है और हमारा संसद ने जो पूछा है क्या मेयर काउंसिल लाएंगे कि नहीं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव हमारे पास आएगा तब उनको विचार किया. आज कोई प्रस्ताव है नहीं. थैंक यू. दूसरा सवाल. सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि एमसीडी के अंदर ये जरूरी है कि इसको पहले विभाजन कर दिया गया था 3 कॉरपोरेशंस के अंदर, तो कम से कम 3 कॉरपोरेशन को क्या मंत्री जी दोबारा से एक करने के प्रस्ताव लाएंगे और वे अफसरों के ऊपर अंकुश रखने के लिए क्या सरकार करेगी, ये मैं जानना चाहता हूं. अगर दिल्ली सरकार तो कॉरपोरेशन को फंड ही नहीं दे रही है, जितने फंड 500 करोड़ देने थे, दिल्ली एमसीडी उनकी सैलरी नहीं दे पा रही है, तो इसके बारे में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी ताकि एमसीडी की जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर किया जा सके? थैंक यू. अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी बताया कि जो एमसीडी वो राज्य सरकार के अधीन है. केंद्र सरकार जरूर डायरेक्शन दे सकती है. कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ परामर्श करते हैं, अधिकारियों को भी हम बुलाते हैं. कोई माननीय सदस्य ने बोला कि उसका इंक्वायरी, हमने 1362 केस है उसमें से 630 केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. राज्य सरकार को हम डायरेक्शन करने वाले हैं, बार बार रिविजन को हम बोलेंगे और कोई पर्टिकुलर केस होगा तो उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं हम. थैंक यू. श्री परवेज हाशमी. चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने एक चीज़ तो ये कही कि दिल्ली राज्य सरकार के अंडर में एमसीडी है, एसीबी का जो हेड है
उसको बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में रोज झगड़े हो रहे हैं, वो ये बना नहीं पा रहे। एलजी अपना एसीबी हेड बना के रखना चाहता है, चीफ मिनिस्टर अपना बना के रखना चाहता है एंटी क्राइम ब्रांच का, जो इस मैटर को देखती है। दूसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर कि सीबीआई ने 2013 में 13 केस रजिस्टर किए, एंटी क्राइम ब्रांच ने 5 किए। 2014 में सीबीआई ने 10 किए, एंटी क्राइम ब्रांच ने 5 किए। जो जवाब आया मैं उसे पढ़ रहा हूँ। 2015 में सीबीआई ने 3 किए, एंटी क्राइम ब्रांच ने भी 3 किए। इसमें 46 ऑफिसर्स को 13 में बुक किया, 14 में 24 ऑफिसर्स को बुक किया, 2015 में 9 ऑफिसर्स को बुक किया गया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सीबीआई ने और एंटी क्राइम ब्रांच ने कितने लोगों के इन ऑफिसर्स में से अभी तक कन्विक्ट किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? महोदय, उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया है, कितना ऑफिशियल इन्वॉल्व है, किसको पेनलाइज किया। तो नॉर्थ एमसीडी में 178 ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, उसमें से 70 सुन लीजिए। मैं पूरा फिगर दिया है, और अभी भी स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और हम विजिलेंस रखते हैं, डायरेक्शन करते हैं, और अभी जल्दी से जल्दी उसको निपटारा करेंगे। थैंक यू। श्री तुलसी। Honorable Chairman, sir, it is a matter of great regret that 300 officials are charged between 2012 and 2015 with corruption cases. This is the information which is available under the Right to Information Act and has been obtained. There are otherwise 4,299 cases which are pending pertaining to the corruption with regard to NCD Vigilance Department, and they remain pending for some time. 1435 cases of anti-corruption branch are pending. 2,877 cases with CBI are pending. How is the government hoping to tackle the menace of corruption? Because Delhi and Delhi local bodies are said to be most corrupt in the country. Thank you. हमारे पास जो एमसीडी से आंकड़े आए, तो टोटल केस 1332 केस आए हैं। उसमें से अभी जो जांच चल रही है 630 में, विभागीय कार्रवाई जो करते हैं उसमें 194 है, फाइनल किए गए विभाग की कार्रवाई में 29 है, पेंडिंग केस 165 जो बार बार बात किया, हमारा सांसद भी उठाया। इन्वॉल्व अधिकारी जो इन्वॉल्व है, वैसे 362 अधिकारी इन्वॉल्व है, जिसको सजा की ऐसे 24 है, और निर्दोष 26 है। अभी 312 के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, और उसके ऊपर हम कड़े कदम उठाएंगे। Question 182. Sir, Government of India wants self-sufficiency in edible oil, but third highest foreign exchange we are That's all right. spending is on edible oil imports. You After have given crude an oil- answer. You have given an answer. Statement is laid on the Yes, table sir. of the House. Yes, sir. Let supplementaries be asked. Sir. Sri Rapolo, Sir, here's my question, sir. you are giving the question. All right. I'm sorry. Is the question? I'm sorry. I got it wrong. Sorry. Sir, you made his day. You thought he was a minister. Right. Sir, Government of India. Sir, Government of India wants self-sufficiency in edible oil, but third highest foreign exchange we are spending is on edible oil imports after crude oil and gold. And our major imports from Argentina, Brazil, Indonesia, Malaysia are going up from 30% to nearly 70%. So, instead of becoming self-sufficiency, we are becoming import dependent. So, I would like to know from the Honorable Minister, will she consider the increasing the import duty on crude edible oils to 25% from 12.5% and to 45% on the refined variety from the present 20%. Thank you. If not, reasons may be given. Chairman, sir, I'd like to inform the honourable member that is concerned that our dependency on imported edible oil is growing, and the government is taking every step to make sure that there is greater production of oilseeds in the country. However, till such a time we are able to
divert more acreage under oil seeds, we'll still have to be importing edible oil. In that, the broader policy is to bring in a kind of a balance between the requirement of the consumer, the requirement of the farmer, and also the millers who are in between the three. So in order to bring in a balance, we do have import duty structure which has brought a certain balance between what we impose on the crude which comes in and what is imported on the refined oil which comes in, so that we maintain that balance and also create opportunities for employment creation in this country. And that is where the current on the palm oil, the crude palm and the refined palm which comes into this country, there is the 7.5% balance which is maintained, crude being cheaper in the sense less duty is imposed on it and more duty is imposed on the refined. Second question. Sir, Honorable Minister has rightly said that the palm oil is a major part of the total edible oil imports. So, a better opinion is to promote the cultivation of palm oil, which can produce 4 tons or more oil in per hectare. There is a potential to bring up to 20 lakh hectares under its mainly in the upland paddy growing areas of coastal Andhra Pradesh, where you have adequate rainfall as well as irrigation facility. This can straight away lead to the double the country's existing edible oil production of about 90 lakh hectare of tons. So I would like to know from the Honorable Minister what helps he is planning to extend Andhra Pradesh to make Andhra Pradesh oil palm hub in the country. Sir, on this, I'm glad that the member has raised a very important question. Palm definitely is one of the cheapest oils, edible oils, because of the productivity per hectare. And rightly, the upland areas of Andhra Pradesh, the coastal districts, upland areas are very conducively placed in for the production of palm. And I'm glad to say it is only last month, with the intervention of the Agriculture Minister and the encouragement of the Prime Minister, this time the procurement prices have been given a historical high. We've given 7,888 per metric ton for palm in order to encourage the production of palm and in order that the farmers do not suffer because of the fall in the international fresh fruit berries of the palm and also the crude palm which comes into the country. And as a result, we've given them a good package through which this year the palm growers will be encouraged to continue in the practice. And even more, the foreign direct investment policy has been opened up in such a way that plantations such as palm can receive investments, and the government has opened up potential for it. So that's one of the ways in which we have encouraged production and cultivation of palm crops. Thank you. Shri Bhupender Singh. सर, चेयरमैन सर, क्या ये सच है कि पहले पाम ऑयल पीडीएस सिस्टम में सब्सिडाइज रेट में दिया जाता था देश में और उसको बंद कर दिया गया है? क्या ये सच है कि पाम ऑयल आज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो डिस्ट्रिक्ट हैं देश के, वहाँ पे पाम ऑयल के लिए सब्सिडी देने के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत में आपने कितने जिले और कितने ब्लॉक को उसमें डाला है और उसमें उड़ीसा के कितने 19-23 जिले हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, वहाँ के आप उसकी सब्सिडी देने के लिए कुछ कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं आप? Chairman, sir, I agree this is a discussion on or question related to palm, but we are talking about palm, crude palm import and edible oils and not so much on the distribution through PDS network. It may be a very important question to raise and I'm willing to answer that question some other time, but this doesn't relate to the germane Agriculture Ministry has started this. Listen to the answer, please. So, since it doesn't relate to the core element of this question which has been asked, I would request the honourable member to approach. Fair enough. Shri Ramchandra Rao. Ramchandra Rao. Through the minister, I would like to know, was there any time limit put up by the central government to see that the farmers receives their remunerative price? Is the center aware whether the process of giving the subsidy, portion started reaching the farmers? If not,
what are the steps they are going to take. To the best of my information, the farmers haven't yet received this announced remuneration yet. There was a time limit of 1 month given, sir, from the date of from the day when the announcement was made. But even on that very day, I had explained that it is subject to an extension by 1 more month, which would be sometime early July with the extension. So there is still time for the farmers to have their crops procured by the millers. And as far as the information that I have, the farmers have started receiving the subsidy which is being given, the price which has been announced. If there are farmers who have not received it, I welcome the member to inform us, and we'll certainly go into the details. Shri Premchand Gupta. जी मंत्री महोदय ने बताया कि पाम ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक मार्केट में वो हर साल बढ़ती जा रही है। आपने जो डेटा दिया है उसमें भी ये शो करता है कि रिक्वायरमेंट हर साल बढ़ती जा रही है। लेकिन एक चीज़ समझ से बाहर है मैडम कि सरकार ने जानते हुए कि पाम ऑयल की रिक्वायरमेंट हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे दालों की है ऐसी पाम ऑयल की है, हमारे खाने का एक हिस्सा है, तो इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आप जो ये इंपोर्ट ड्यूटी में जो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं उसका क्या कारण है? श्रीमान जी, अगर आप इस डेटा में देखेंगे तो यूएई से इंपोर्ट हो रहा है पाम ऑयल। यूएई के 5000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर के आसपास पाम ऑयल प्रोडक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सब रेगिस्तान है जैसे आप जानते हैं। श्रीमान जी, ईयर 2014-15 में यूएई से इंपोर्ट हुआ 2,39,843 मेट्रिक टन और ईयर 15-16 में ये बढ़ के हो गया 2,44,903 टन। मैं बोलना चाहता हूँ कि पाम ऑयल की जो इंपोर्ट पॉलिसी है ये एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में, लेकिन आप कुछ ऐसा तो करिए कि ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को उसको बढ़ाया जा सके और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, इंपोर्ट कम किए जा सके। हमारा फॉरेन एक्सचेंज का आउटगो होता है, यहाँ फार्मर को पैसा ज़्यादा मिलेगा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन विदेश में अगर हमारा पैसा जाता है जो एक चीज़ जिसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्यों नहीं बनाते आप? थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर सही उठा रहे हैं विषय, मगर मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन के नाते बोलना चाहती हूँ कि ये टेबल जो आपने शायद रेफर किए हैं वो वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स के, सिर्फ पाम ऑयल का इंपोर्ट करना ही है, इसीलिए यूएई का रेफरेंस जो आती है वो it is edible oil, whether it is palm oil or it is edible oil or whether it is desi ghee or vegetable oil or any oil, it is not industrial oil. No, I take honorable member's point, but a matter of clarification that the table did not refer to palm oil. We have given you vegetable oil wala table, and his concern rightly, UAE couldn't be exporting and all that is well taken. But the larger point that if there is so much dependence on imported edible oil, is the government doing anything at all in coming up with strategies so that this dependence can come down? I thought I did refer to that in my initial answer. The government is definitely having plans to extend the acreage under palm, bring in more acreages under groundnut, under oil seeds such as sesame and sunflower, also looking at cottonseed oil and rapeseed and mustard oil. Certainly the importance for diverting more acreages towards growing of oil seeds is a serious matter of concern of this government, and we want more oil seeds to be grown, and I'm happy to refer here, of course, a matter which happened yesterday in the other house. Manya Ramvilas Paswanji also gave a detailed reply highlighting how the government is looking at greater oil seeds growth in this country. Thank you. Question 183. Sir. Let the answer be given. Answer is late on the table.
Supplementaries. Sir, thank you, sir. So the answer of the Honorable Minister is well appreciated, sir. And as per the guidelines of the Smart City Mission, it is clearly stated that decent quality of life is to be provided to its citizens. Also, health has been included as one of the core infrastructure elements in a smart city. But as per my small knowledge goes, and quite logically speaking, sir, decent quality of life to citizens cannot be possible without good health, and good health can never be possible without physical activities and sports, because I think a healthy body has a healthy mind. So will the government make it mandatory for the states to include development of sports infrastructures in their proposal for the smart cities? This is my question to Honorable Minister, sir. Respected Chairman, sir. Actually, the question related to the Urban Ministry, because as you all know, being a learned member of this August House, that whatever mission guideline has been set by the respective ministry, and in that it has been clarified that on the basis of the suggestion comes from the citizen living in that particular proposed cities, the provision is created for building smart cities, for smart decisions, and also to develop clean and sustainable kind of scheme for the decent quality life in those proposed cities. So anyway, from our side, like we have already requested the respected the Minister of Urban Ministry that separate provisions should also be created to promote sports infrastructure facilities in those proposed 20 round 1 smart cities proposals. Thank you. Second question. Sir, although I haven't seen what proposals have exactly come from all the smart cities in the first 20 round, first round with the 20 cities, still, I think the government, if agrees to my my proposal that yes, healthy Is it mind a question leads, or a proposal? Sir, no. I'll ask my question, sir. Of course, I'll ask my question. A healthy mind needs a healthy body, and for that, sports and physical activities must be made mandatory, and it should not be just a proposal from the government to the cities, Question, but they please. must make a mandatory. Will the Honorable Minister assure me before this House that yes, sports and physical activities will be mandatory in this smart city mission, in the guidelines of the smart city mission? Of making a mandatory provision, I believe it is beyond my jurisdiction, because this particular provision will have to be created as per the mandate, in consultation with the citizen living in those smart cities. Please. But No, please, 1 minute. This is not the question. You've asked a specific question. The answer is given in the last line. Minister is saying that he is not going to answer this because it doesn't come under his jurisdiction. No. He has I'm not given you saying the this. answer. He has given you the answer. Shri Dilip Tarke. So I hope you'll agree this is a right proposal, right suggestion, and a good question from my side. No, it's a suggestion, but it's not a question. Yes. थैंक यू सर मेरे ख्याल से ऑलरेडी मेरा कॉलीग ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन इससे मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो देखा गया है हमारे अर्बन डिपार्टमेंट में जितने भी स्पोर्ट्स का परसेंटेज कम होते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स यूथ 62% स्टूडेंट यूथ इंटरेस्टेड नहीं है स्पोर्ट्स करने में या एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं सर्वे के हिसाब से. सो बहुत अच्छा प्रपोजल स्मार्ट सिटी गाइडलाइंस के हिसाब से प्रपोजल दिया गया है. मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इसलिए 62% जो यूथ स्पोर्ट्स नहीं करते, इसलिए लाखों यूथ डायबिटीज़ के अफेक्ट हुए हैं. तो इसलिए मैं वही सेम क्वेश्चन में करना चाहूँगा, क्या अर्बन डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्ले ग्राउंड, ग्रीन ग्राउंड, इस ग्राउंड प्रोवाइड करने के लिए आप प्रपोजल दे रहे हैं क्या?
सवाल के एम्बिट में रहिए. I have already informed the honourable member that in this regard we have already written a letter to the concerned ministry to create provision to promote sports in those smart cities, particularly sports infrastructure facilities, gymnasium hall, fitness, neighborhood parks, center, which are essentially accessible to majority of the citizen. So as per your expectation, this has already been communicated to the concerned ministry. Thank you. Shri Ramdas Advale. Mike. Sir, my number is 52, not 51. कोई बात नहीं आप बोल. और मेरा नंबर भी बदल गया है. मेरा नंबर 49 था और मुझे 52 पर भेज दिया गया है. मतलब मेरा नंबर ऐसा नहीं बदलना चाहिए था. 6 साल तक मेरा 49 नंबर होना चाहिए था, लेकिन मेरा क्यों बदला मुझे मालूम नहीं है. ठीक बात है, तो नंबर कोई भी हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका प्रश्न क्या है? हाँ, स्मार्ट शहरों में मतलब प्लेग्राउंड के संबंध में क्वेश्चन है. तो मेरा प्रश्न इतना ही है कि मतलब शहरों में तो प्लेग्राउंड होना चाहिए, लेकिन विलेज में, गांव में भी प्लेग्राउंड की आवश्यकता है. शहरों में तो मतलब स्कूल में भी प्लेग्राउंड होते हैं, सरकारी भी होना चाहिए, लेकिन गांव में मतलब प्लेग्राउंड करने के लिए सरकार के सामने क्या योजना है? खेल मंत्री इसका उत्तर दे. Respected Chairman, sir, in this regard, as you know, that we have introduced a new scheme called Khelo India. Through this scheme, in every block and district, we are going to develop the infrastructure facilities for a youngster to play well. But we must admit the fact that sports is a state subject, and the primary responsibility of the state government is to build up the infrastructure facilities. Right. Thank you. Shri Kalita. Please. Honorable Sir, Please. Sir, Guwahati is included as in the proposal of 20 smart cities. So my question will be restricted to Guwahati only, which has held a very successful South Asian Games recently, international sports. So in the sports arena, it is an important city. But here in the reply, it has been said that in the first round of selected 20 smart cities, the sports arena has not been included in the smart city proposals. I want to know from the Honorable Minister whether the Minister will take positive steps to at different level to include sports arenas in the second smart city proposals. Thank you. Respected Chairman, sir, in this regard, we have already, this thing communicated to the concerned ministry, and also our special request to create infrastructure facilities in those smart cities. That is always there. Question 184. Questioner not present, let the answer be given. Shri Javed Ali Khan. माननीय सभापति जी, हमारे समाज में जितना पुराना इतिहास परिवार का या विवाह की इकाई का है, उतना ही पुराना इतिहास घरेलू विवादों का है, जो आगे चलकर घरेलू हिंसा को जन्म देते हैं. महिला सम्मान, महिला अधिकार, महिला जागृति, महिला संरक्षण, इन सारे विषयों से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि घरेलू हिंसा कानून के दुरुपयोग के भी बहुत सारे मामले प्रकाश में आते हैं. मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म आपने बनाया है जिसके ज़रिए कितने झूठे मुकदमे घरेलू हिंसा के दर्ज हुए, कितने फर्जी मुकदमे घरेलू हिंसा के दर्ज होते हैं,
और फर्जी मुकदमे या झूठे मुकदमे घरेलू हिंसा से संबंधित जब प्लीज सुन लीजिए मैंने प्लीज मैंने no, तो don't सारे interfere. विषयों से अपनी सहमति व्यक्त Don't करते हुए interfere. सवाल वो पूछा। प्लीज दुरुपयोग गलत है। प्लीज एड्रेस द चेयर, प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं लेट द यही क्वेश्चन। जानना चाहता हूं कि घरेलू हिंसा का कितना दुरुपयोग होता है, इसका भी कोई आंकड़ा सरकार के पास है? सही चेयरमैन सर, ये मामला बहुत संवेदनशील है और बहुत सा पक्ष सरकार के पास आते हैं। सबसे पहले हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वो है महिलाओं का सुरक्षा, क्योंकि महिलाओं का सुरक्षा और महिलाओं का इज्जत वो किसी भी समाज के लिए प्राथमिकता होना ही चाहिए। उसमें कोई किसी तरह का समझौता या डील नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात भी सही है कि कभी कभी कानून का कोई प्रोविज़न होता है तो उसका गलत प्रयोग, गलत इस्तेमाल या उसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है, इसमें भी कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन पिछली बार जब हम लोगों के सामने में ऐसा चीज़ आया कि कुछ ऐसा ग्रुप बना है समाज में, कुछ NGO से, जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दिया है कि बड़ी मात्रा में दुरुपयोग भी हुआ है, ख़ास करके जो दाउरी एक्ट जो मामला है और काफ़ी आपके और भी प्रोविजंस है, उसमें ऐसे मामला आया है। उसको निपटने का प्रावधान या उसका प्रक्रिया वो तो सरकार करेंगे, लेकिन साथ साथ जैसे मैंने कहा कि प्राथमिकता जो है, हम लोग महिला सुरक्षा को ही प्राथमिकता दे करके काम करना चाहिए, तभी एक बहुत अच्छा समाज का निर्माण हो पाएगा। श्रीमती झरना दास वैद्य। सर, इस प्रश्नों में डोमेस्टिक वायलेंस में मिनिस्टर आंकड़ा तो दिया है। मैं मिनिस्टर से ये पूछना चाहती हूँ आपका माध्यम से, PAR देख रहे हूँ 693 और PCS हुआ है 639 और 13 हुआ है PCB। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो अरेस्ट हुआ है, तो कॉन्विक्टेड इतना कम क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूँ। वो कैसे छोड़ जाते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस में अरेस्ट हुआ है, इसके बाद इतना सारी आप लोगों ने आंकड़ा दिया है, इतना सारी अरेस्ट हुआ है, इसके बाद कन्विक्शन जो है वो देख रहा हूँ मात्र 13 है। क्यों इतना सारी आदमी जो डोमेस्टिक वायलेंस में जो जुड़ा हुआ है वो कैसे छूट जाते हैं और क्यों छूट जाते हैं, ये मेरा क्वेश्चन। थैंक यू सर। ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। ये एक तो हो गया सिविल लॉ, जो हमने जो यहाँ आंकड़े पेश किया है, जो सवाल जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ये एक सिविल लॉ है जो बहुत ही क्रिमिनल नेचर का नहीं होता है। जब हम क्रिमिनल जो केसेस का बात करेंगे तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि सवाल क्रिमिनल से जुड़ा हुआ नहीं है। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस जो 2005 में ये एक्ट बना और 2006 में इसका लागत हुआ, उसका लागू होने का प्रक्रिया शुरू हुआ। उसके बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कभी पत्नी और पति के बीच में या घर में आपस में होता है, तो ये सब कंपाउंडेबल होता है, आपस में सुलझ भी लेता है। लेकिन जो क्रिमिनल अगर आप बात करेंगे तो उसका आंकड़ा तो बहुत विस्तार से मैं दे सकता हूँ। अब ये जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस से उसके अलावा डाउरी प्रोविजन एक्ट है, आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड वुमेन एक्ट होता है, इलीगल ट्रैफिकिंग का एक्ट होता है। ये इसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। मैं सिविल पर्सन का ही आपको यहाँ जिक्र किया, इसलिए 13 का आंकड़े ये सामने में हमने यहाँ दिखाया है। श्रीमती राजनी पाटिल। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगी मंत्री जी से, मंत्री जी ने अभी जो जवाब दिया उसमें सिविल एंड क्रिमिनल, लेकिन महिलाओं के लिए जो अत्याचार होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने जो आंकड़ा दिया है 13 साल में, पूरे 2014 में पूरे देश में सिर्फ सिविल सूट कन्विक्टेड 13 हुए हैं, ये इनका आंकड़ा कहता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक गांव का आंकड़ा है या पूरे देश का आंकड़ा है? क्योंकि हम गांव से आते हैं सर, घरेलू हिंसाचार हर घर में
होता है। और लेकिन हमारे भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ महिलाएं गलत तरीके से इल्जाम लगाती है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं का अपना हक मांगने का भी अधिकार अगर छीनने हो गया आप इस तरह से बोल के, तो कैसे वो अधिकार मांगेगी? मैं आपके माध्यम से सर ये पूछना चाहूंगी कि देश में हर मिनट में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसाचार की घटना होती है। कन्विक्शन रेट 19% है आपके कहने से, रजिस्टर्ड केस 426 है। जो फियर ऑफ लॉ है, जो कानून का भय है, वो लोगों में पैदा हो और ये हिंसाचार ही ना हो, इसलिए हिंसाचार ही ना हो। लेकिन भाई बैठ जाइए, बैठ। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। लेकिन जो फियर ऑफ लॉ है, कानून का जो भय है, वो उत्पन्न होने के लिए आपने क्या सख्त कदम उठाने का सोचा है? थैंक यू सर। I think in the previous answer to the question, I am unable to convince the honorable members. If I give the total figure for all the crimes against women, it is going to be huge. I am referring to the question which is civil in nature. That is why the figure is shown less. So please understand that. Now, if you want to know in detail, if you permit, I can talk about the criminal part also. कानून आप क्या करेंगे उसके लिए तामीली करने के? सर आपका परमिशन से मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस में जो प्रोविजन है, खास करके मैं दो चीज आपको बताना चाहता हूं। ये हर जिले में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स नियुक्त किया गया है। ज़्यादातर जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री का जो संबंधित अधिकारी होते हैं, CDPO वगैरह जो होते हैं, वो उसको पदभार एडिशनल पोस्ट संभालते हैं ताकि वो फैसिलिटेट करें, ताकि he or she plays the role of facilitator for the victim and acts as a bridge between the judiciary and the police, so that he gets or she gets the justice. That is why this civil, I want to confine to the civil nature of the crime, which is normally within the family. That is why the figure is less. Thank you. Please, no. Please, please sit down. No, please sit down. Please, sir. No, 1 minute. 1 minute, please. Sir. Please, this is not a debate. This is not a debate. No. Sir. This is, बैठ जाइए. If you permit, sir, if you permit. देखिए, बैठ जाइए. This is not a debate. This is not a debate. It's not your question. This question is over. बैठ जाइए. Satyavrat ji, please sit down. Please sit down. No. Question 1. Sir, if you... No. The question is over. This question is over. Yes. You can have a fuller discussion on it. This is over. देखिए, मत भाई बैठ जाइए. सत्यव्रत जी, please sit down. Please sit down. No, sir. Please, this is not your question. No, this is not going on record. No. This sir, is, if you permit, sir, just small Honorable Minister, clarification. we can have a... शैलजा जी, आप सुनिए. Let me say something. 1 minute, please. Let me say something. It does not reflect. Please give me 1 minute. 1 minute. If you have read the answer, then you will notice that there is a huge problem in the country. The act was made in 2005. The collection of data started in 2014. Unmentioned here is when were the rules made to implement the act. So we have a social problem which cuts across all sections of society. You can have a debate on it. Let me go to the next question, which is 185. Question 185. Please, no. This question is over. Please sit down. Sir, I just need a protection, sir. Please, sir. Yes. Sir, what I'm talking about, please try to understand. I'm talking about the act. See, if you quote the provisions of the IPC, then you invoke so many things. I'm talking about the act. Please,
Please sit down. Please sit down. Read the question carefully. Yes, sir. No, he is quoting the act, which is what the question is about. Please ask your question. 185. There are criminal act and there are civil act. You have to understand the difference. 185. Let the answer That's be what I'm given. saying. No, this is... No, this Bhai, is totally Sharma Sahab, misleading. please, please. That is because the That is over, Sharma Sahab. NCRB. Please. No. Please sit down. No. That is what I'm saying. This is over. You have to understand the question first. This is over. This is over. It is not the member's question. So the member, it is not her question. No, I'm sorry. No, you can't. Sharma Sahab, please. No. Did you ask a supplementary question? No. Did you ask a supplementary question? No. Did you ask a supplementary question? No. Made a comment. Please, sir. Please allow the next question to for further proceed. discussion. Why are you? If you want a debate on this, You give notice for further discussion. why have a debate on this? Have a debate on this. By Shelja ji, please. Okay, you give notice for further Shelja ji, discussion. please don't. Please don't. Please don't. Please. Will you please sit down? Please sit down. Please sit down and I will. No, please. देखिए शर्मा साहब, please. Can we discuss this matter a little later? Can we discuss this matter a little later? Could you please sit down? Could you please sit down? Stop. Please sit down. Please sit down. No. Please sit down. Please sit down. Question 185. Question. I beg your pardon. What do you mean, no, sir? I'm taking up a question. Don't interrupt any further. I will clarify the matter to you after the question hour. No, look, please sit down. Please sit down. The chair is not expected to comment on questions and answers. But no, 1 minute. 1 minute, please, honorable members. Please, let me point out something. The act was made in 2005. 1 minute. Please keep quiet. The collection of data started in 2004. Just a minute, think about it. It took you 9 years to collect data. And unmentioned in the answer is when the rules were made. They were not made in 2005. I do not know when the rules were made, but they were certainly not made in 2005. So let's not go into it. We will have a proper discussion on this when time is available. My point is that the minister You have not been used given the floor. objectionable language when we stood up. So please understand my point. If you are Sir, I'm talking not about on the language, point the record will be examined. That's all. Exactly. Sir, Now please- sit down. Sit down. Please. Mr. Kalita, you've had your supplementary. You have a discussion by all means. Sir, question number 185. Let the answer be given. सभा पटल पर रखा गया है। सर, एक आपके माध्यम से ये जो प्रश्न मेरा है बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1997 में, जिसमें भारत भी एक सिग्नेटरीज रहा है, और उसके बाद में 2010 में ये कानून को लोकसभा के माध्यम से 7/5/2010 को पास किया गया था।
और इसी कानून को फिर राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया था। लेकिन पिछली लोकसभा का टर्म खत्म होने के कारण यह कानून पारित नहीं हो सका। लेकिन पिछले 2 साल से यह सरकार आने के बाद ये इतना संवेदनशील विषय है सर कि इसके ऊपर में टॉर्चर से संबंधित जो कानून सरकार को लाना था, और जहां सरकार ने ये वादा किया था देश की जनता के साथ कि वो जितने भी पुराने फालतू या जो काम में नहीं आते जो कानून हैं, उनको हर रोज एक कानून को बदलेगी या उसे अमेंड कर नया कानून लाएगी। सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है सर कि सरकार 2 साल आने के बावजूद भी पिछले 2 सालों में ये सरकार ने आज जवाब दिया है कि वो अभी भी इसको एग्जामिन कर रही है। तो ये एग्जामिन जो करने का उन्होंने यहाँ पर उत्तर दिया है, मैं सरकार के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या वह समझते हैं कि ठीक, ऑलराइट, लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड। इसके ऊपर में क्वेश्चन जवाब सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने सही बात बताया कि यूएन कन्वेंशन में टॉर्चर के बारे में 9 दिसंबर 1975 में डिक्लेरेशन हुआ था। उसके बाद अपना भारत सरकार ने 1997 में उसमें शामिल हुए, सिग्नेचर किया। उसके बाद विदेश मंत्रालय से होम मिनिस्ट्री को कागज आया, अटॉर्नी जनरल का राय लिया और 2010 में ये बिल लोकसभा में भी पास किया, पर राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी में गया। इस समय के अंदर 15वीं लोकसभा का रिजोल्यूशन हो गया तो ये बिल लैप्स हो गया। फिर से हमने कार्यवाही चालू की है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ का करना है, सुधार करना है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की भी राय लेनी पड़ती है, और उसके लिए हमने पूरा ड्राफ्ट बिल तैयार कर लिया है। कुछ ही समय में हम पार्लियामेंट में लाएंगे, क्योंकि जब तक राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से भी उसमें सीआरपीसी में आईपीसी 330 और 331 में भी थोड़ा सुधार करने का है। उसमें जो हर्ट शब्द था उसकी जगह हर्ट और टॉर्चर वो शब्द ऐड करेंगे, इसकी वजह से बिल थोड़ा अच्छा बनेगा। दूसरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था कि सरकार इस कानून को कितने, कारण कि आप जितने एंटी डेमोक्रेट बिल हैं, चाहे वो उत्तराखंड से संबंधित अप्रोप्रिएशन बिल हो, उस प्रकार के बिल तो आप जल्दी जल्दी ला लेते हैं, लेकिन जो इतने संवेदनशील बिल हैं जिनके ऊपर में आपको और पूरे देश की जनता की नज़र लगी हुई है, क्या उस बिल को का स्पेसिफिक कोई टाइम फ्रेम आप बतला पाएंगे कि अगले सेशन में आप इसे लाएंगे ताकि हम सब मिलकर उसको पास कर सकें और इससे संबंधित। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें हर बार सिलेक्ट कमेटी के जो रिकमेंडेशन आए उसके सिवाय भी हमारा पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, सबने भी इसमें किए, तो हर बार अलग अलग सूचना आते हैं। कोई बार पुलिस का सूचना आता है कि अधिकारियों को इसमें शामिल करना कि नहीं करना चाहिए। फुल फ्लेज बिल का ड्राफ्ट बन चुका है और उसी समय में ये इसके लाएंगे। ऐसा गारंटी टाइम पर नहीं दे सकता हूँ कि इतने महीने में आएगा, लेकिन इसका पूरा ड्राफ्ट लॉ मिनिस्ट्री में भी भेज दिया है, उससे भी रिकमेंडेशन देंगे, लेकिन इसमें सुधार करेंगे। थैंक यू। श्री पवन वर्मा। Chairman sir, the minister in his reply has said, and also in his reply to the supplementary question, that the government intends to bring this legislation to Parliament. In making this decision and bringing this bill before the House, can the minister inform us how many countries have not ratified this convention thus far? And among those countries which have not ratified, are there any permanent 5 members of the United Nations included? यूएन कन्वेंशन में 159 स्टेट पार्टीज हैं और 83 ने सिग्नेचर किया है। हमने भी सिग्नेचर 14/10/1997 में किया है और ये रेटिफाई करने के लिए हर कदम उठा रहे हैं हम। And do they include any permanent 5? My question is that P5, among the permanent 5, have all of them ratified this, including, I can say specifically China? And which are the countries which have not ratified, and will this be a factor when they are bringing this bill before the House? अध्यक्ष महोदय, माननीय संसद ने बताया है कि दूसरे देशों ने रेटिफाइड किया कि नहीं किया, उसका डिटेल में लाके माननीय सदस्य को पहुंचा दूंगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। क्वेश्चन 186।
सर, मंत्री महोदय ने जो रिप्लाई दिया है बहुत ही आश्चर्यजनक है। मेरा मेन क्वेश्चन जो था, वेदर द नंबर ऑफ पर्सन्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट हैज फॉलन इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। Very cleverly, Minister has tried to reply. 28 such surveys have been conducted by Labour Bureau so far. According to the survey results, overall estimated employment in these selected sectors has experienced a net addition of 38.81 lakhs jobs, starting from first survey October 2008 to December 2015. So, जो यूपीए की सरकार के द्वारा जो इंक्रीज हुए थे जॉब, वो भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। साथ साथ ये भी कहा कि एज पर द रिपोर्ट ऑफ द क्वार्टरली सर्वे ऑफ द लेबर ब्यूरो, देयर हैज बीन एन एस्टिमेटेड इंक्रीज ऑफ 5.56 lakh person in 8 quarters. That also included the UPA from April 14 to June 14. That is 1.82, that is highest. लेकिन मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि जब मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो मेरे ख्याल से आज हालत बहुत ही बुरी है। एक्सपोर्ट जो है कम हो रहा है, खास तौर पे लेदर, देन द जेम्स एंड ज्वेलरी एंड द थ्री सेक्टर्स में, जेम्स एंड ज्वेलरी, देन द हैंडलूम एंड पावरलूम सेक्टर, जो अगर इसमें अगर लेबर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, और इस सरकार ने ये वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ जॉब उपलब्ध कराएंगे। सवाल क्या है? तो मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ, क्या जो आंकड़े दिए गए हैं सही आंकड़े दिए गए हैं? और अगर ये सही नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ये सरकार या अपना जो वादा है 2 करोड़ का, वो टारगेट पूरा करने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाने जा रही है या नहीं? थैंक यू। Honorable Chairman, sir, whatever the question he has given, I have totally correctly answered the question, sir, because he has asked the quarterly survey, number one. There are, I'll tell you, please, let me hear. See, one is, there is NSSO survey. NSSO survey is for once in 5 years, number two. And our Labour Bureau surveys is quarterly surveys. And that which he has asked, I have clearly mentioned, sir, either UPA government or NDA government. But regarding the 2 crore jobs, which he is asking, for that, our Prime Minister flagship programs, that is Make in India, Digital India and Skill India. And I'll tell you please, my senior colleague. Second is, for through this, we are creating a conducive atmosphere, environment for job creation. For that, the first initiative which we have started in the beginning itself, 2014 itself, that first is some of the reforms which we have gone, that is e-governance reforms and Samasuvida portal. I will tell you answer, please hear me, because you have to hear what this government has did. At least, number two, and another important jobs are, see, National Career Council Centers. And third ones are the portability of UAN. I will tell you how much in increasing job, how job will be increased. Please hear me for a few minutes. And second one is for labour law reforms. For labour law reforms also, 44 labour laws we have. For simplification, we are going for 4 labour codes. Regarding that also, social security. Through this initiation, number two. Second is, sir, very important one is which we are doing is the skill development initiative. Thank you. Skill development initiative, which means the gap is 10 crore people are needed for 2022. And now, please, sir, let me clear this house, because which is the skill development is one of the... Please answer the question only. Answer, sir. That employment generation is
going on, that economic growth is increasing, GDP is increasing. Thank you. And many of the investments are coming. Second question. And definitely, it will be definitely Thank you. employment generation will be high priority. Thank you. Second question. It's a ridiculous, ये सरकार सिर्फ माहौल बनाने का आप काम सवाल करती पूछ है लीजिए। या मार्केटिंग का काम करती है, नेट रिजल्ट कुछ सवाल भी नहीं पूछ है। लीजिए। मेरा सेकंड सप्लीमेंट ये है, in this answer he has said the government has also decided to strategically promote labor intensive manufacturing and expand the employment. बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेबर लॉस जो है डाइल्यूट किए जा रहे हैं और देयर इज नो प्रोटेक्शन टू द लेबर। ये सरकार मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट सेक्टर की ज्यादा चिंता कर रही है ताकि लेबर सेक्टर की ज्यादा चिंता करनी। सवाल पूछ लीजिए। तो मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहूंगा कि लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कोई ऐसे कानून आप बनाएंगे कि जिससे लेबर प्रोटेक्ट हो सके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, या जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रोटेक्शन ठीक तरह से हो सके। तो मैं और जिस तरह से अलग अलग स्टेट में जिस तरह से लेबर लॉस को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, खास तौर पे राजस्थान और गुजरात में, आपका सवाल क्या है? इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाएंगे? As far as labor laws are concerned, sir, we are protecting fully the rights of workers. Number one. Number two is, and nowhere by this government have taken any rights of the workers. And otherwise, we are creating, as I told you, simplification, rationalization, and amalgamation of laws only. Whereas all enforcement and inspection, other things are, we are keeping it very easy. My priorities, which our senior leader, Ahmed Patel ji asked, sir, in this country, my focus will be, major is on unorganized sector. He is requesting me intensive labor, in which construction workers are there. Construction workers are 4.7 crore workers are there. For them, now we are considering them into the ordinary workers. Now we are providing social security for unorganized workers of these construction workers under EPFO and ESIC. Thank you. So like that, many initiatives have been taken, sir. Shri Tapan Sen, please sit down. Please sit down. Not your question. Time is running, please. Please sit down. Everything Please jumping, do not that is a interfere. problem. Please sit That is a down. problem. Please. The time is running out. Tapanji, Sir, please ask your question. Sir, the question is that Honorable Minister has told about so many India, and the figures have been given that during its regime and also prior to that, from 2008, the employment generation is practically stagnating. That too a survey on a selective sector. If you go beyond the other sector, practically employment generation has turned negative. In this situation, after all your Make in India, Stand Up India, are we not proceeding towards a sit-down India? And the labor law you are talking, is it possible to give labor protection to labor by pushing out 75% of the labor out of the purview of the labor law? Your paper supplied by your labor ministry, Question. what does it say? And you are telling the opposite thing in the house. You are misguiding the house. What's the question? That is the question. All right. That at every Let it be stage, answered. Minister has not relied on factuality. Let it be answered. Sir, first of all, regarding the employment generation, which the data I have given, employment generation is definitely increasing, sir. There is no question of this thing. But in which sector it is coming, either manufacturing sector or any other sector. But regarding the labor laws, and another important aspect I want to tell you, that the unemployment problem, we have initiated new, that is National Career Council Service Portal, with which we have provided approximately, please hear this initiative, new initiative which the government has taken. Question are over. That is,
House is adjourned till 2 p.m.